Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivardhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Jana Vallabha, Jai Girivardhari.
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Jana Girivaradhari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Jana Vallabha, Jai Girivaradhari. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare
Hare Krishna. A very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. So we discussed in our previous session, Maitreya Rishi, he is talking about the creation, how this creation takes place. So he's saying that he's talking about Mahat Tattva, that this Mahat Tattva is the material energy which is before the creation of living entities, this material energy in its raw form. And the living entity, as soon as he comes in touch with Mahat Tattva or this material energy, his original ego, which is that he is a servant of Krishna, gets transformed into false ego. And because of false ego, rather than serving Krishna, he starts to serve this material energy. And that is the root cause of our material manifestation. Our material existence is because of false ego. So we discussed, Maitreya Rishi is talking about that. And then he talks about that how this false ego, it drives the mind and intelligence to work for sense gratification. And in this way, a living entity falls under the trap of this material energy. And why he falls into this trap? Because he becomes rebellious. He becomes averse to the Lord's desire in the spiritual world, and that's why he has to be pushed into this material energy. And in touch with Mahat Tattva, all these different manifestations take place. Now today we'll start our discussion with text 32, Shloka number 32. Tamaso bhut sukshmadir yatah kham lingamatmanah. Tamaso bhut sukshmadir yatah kham lingamatmanah. Translation: the sky is a product of sound, and sound is the transformation of egoistic passion. In other words, the sky is the symbolic representation of the Supreme Soul. So you see, now these topics are a little technical in nature, but we have to understand the essence from these shlokas which are spoken by Maitreya Rishi. We can just imagine the intelligence of devotees, the intelligence of our great sages, that when devotees read these shlokas, they find it little technical, but how great are our sages that they have put before us such divine knowledge in very simply understandable manner. So we discussed that mode of goodness is the cause of development of the mind, and mode of passion is the cause of development of our senses and sense gratificatory desires. And now here in this shloka we see
tamasah bhut sukshma adir. So this tamoguna or mode of ignorance is the cause of the production of sky and sound. And this sky is the symbolic representation of the super soul or Paramatma. Why? Because many a times people imagine, so imaginary form of the Lord, which is the Vishwarupa, which we imagine, which is mentioned in the Bhagavad Gita also, which is mentioned in Bhagavatam also, we have discussed in the earlier sessions. This Vishwarupa of the Lord, this universal form of the Lord, is an imaginary form. Actually, it's not that universal form is the real form of the Lord. No, it's an imaginary form of the Lord. Those who cannot understand the Lord as Supreme Person, those who cannot understand the Lord in his personal features as Krishna. So basically, those who are less intelligent people, those who don't have intelligence, they worship big, big things, mountains, rivers, oceans. So for them to make them understand that everything, this whole material creation is basically manifestation from the Supreme Lord, to make them understand this imaginary form of the Lord is created. It is mentioned in the Vedic scriptures. It's an indirect way of worshipping the Lord, because this material nature is also a manifestation of the Lord's energy. So those who cannot understand Krishna or Lord Vishnu or Narayan, those who cannot worship them directly because they are less intelligent. So for them, this universal form of the Lord is mentioned in the Vedic scriptures. So that's what we see here. And that is why this sky is considered to be manifestation of the Supreme Lord, because they cannot perceive of the original form of Krishna in Golok Vrindavan. They cannot perceive of original form of Krishna as Paramatma. So for them, because for them, there it is mentioned that the Lord is all pervading, and that all pervasive aspect of the Lord is conceived or is given to them to make them understand. And that's why sky is sometimes considered as representation of the Supreme Lord, uh, his Vishwarupa, his universal form. Now, so that's what we see here in this shloka. That lingam means the form of the Lord. So this sky is considered to be the form of the Supreme Lord. Now, text 33, shloka number 33. Just 1 second. Yeah, you can see on your screen. Just 1 second. Just let me check. There is some technical problem. Just 1 second. Give me just one minute. Some technical problem. I'm not able to. You see, this is material world.
some or the other problem will come up, isn't it? Material world is like this only. Let me extract the book for you. Yeah, got it. Yeah, got it. So you see, this material world is like that. Some or the other problem will come up, and we have to depend on the Lord for protection. So text 33, shloka number 33. Kalamayamsha yogena bhagavad vikshitam nabha nabhaso nusritam sparsham vikurvan nirmame nilam. Kalamayamsha yogena bhagavad vikshitam nabha nabhaso nusritam sparsham vikurvan nirmame nilam. Translation. Thereafter, the personality of Godhead glanced over the sky, partly mixed with eternal time and external energy, and thus developed the touch sensation from which the air in the sky was produced. So, this aspect we have discussed in the previous canto also. In the second canto, we discussed that how from the subtlest stage of manifestation, there is gross stage of manifestation. We discussed, if you remember, that how this material sky develops from the spiritual sky, which is Brahma Jyoti, and then from sky there is air. From air there is manifestation of fire. From fire there is manifestation of water, and from water there is manifestation of earth. So we discussed that in the second canto, and same thing is mentioned here by Maitreya Rishi. But one important aspect which we see here in these shlokas, you see in the shloka, what is Maitreya Rishi saying? So he's saying Kala Mayamsha Yogena. Kal. Kal means time, time factor, right? So this time factor, Mayamsha, Maya Amsha Yogena, when this time factor is mixed with Maya, Maya means external energy, which is Mahat Tattva. So when this time factor gets mixed with Mahat Tattva, because if you remember, we discussed in the previous session that time factor, time separates matter from spirit. It separates material world from spiritual world. Spiritual world means no time, material world means time. So Bhagavad Vikshitam. So this time factor is mixed with Mahat Tattva, we discussed in the previous session. Okay. Now, how manifestation takes place? Because now we know that from the subtle stage of manifestation, which is the spiritual sky, this material sky gets generated, which is called Mahat Tattva. And Mahat Tattva means all the ingredients are there in this material world or in this material universe. That is Mahat Tattva. All the ingredients are there, but they are yet not active. So how they get activated, we are seeing here now. How activation takes place. So if you remember, we discussed that this Mahat Tattva
which is called the material energy, is impregnated by the Lord. And how this Mahat Tattva gets impregnated by the Lord? So this Mahat Tattva gets impregnated by the Lord when he glances over this material energy. Just like a father, he impregnates the mother. The Lord, he is the supreme father, and he impregnates this material energy by glancing. If you remember, we discussed. Now, then what happens when he glances? The material energy becomes active. Now, how the Lord glances and what are the different stages of the Lord glancing, his drishti, his glance, how it takes place, now we are seeing here in these shlokas. Very, very interesting, very important. How at different stages, Lord's intervention is required to create this material energy. So, here we see in this shloka that Bhagavad Vikshitam Nabhaha Nabhaso Anusritam Sparsham Vikurvan Nirmame Anilam. So, this sky got generated, okay, and the sky was mixed with time, which is the material energy, okay, or it is also called as external energy of the Lord. But when Krishna glances over this sky mixed with time and material energy, the touch sensation develops, right? And because of this touch sensation, air gets generated. You see. So, if you remember, first the Lord glanced over the creation and this creation started moving. And now again, after it has started moving, again the Lord glances. And that's how air is produced with touch sensation. Okay, so when we move, let us see some more shlokas so that we get a complete picture of how manifestation takes place. Because just by one shloka, we may not be able to understand, right? So let us see the next shloka. Now, in this shloka, what we are seeing, that this material energy was present, but how sky gets generated, the Lord glances over this material energy and the sky gets generated with touch sensation by the glance of Krishna. Okay. Let us see the next shloka. Text 34, shloka number 34. Anilopi vikurvano nabhasoru balanvitaha sasarja rupa tanmatram ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् अनिलोपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्जरूप तन्मात्रम् ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्. Translation. Thereafter, the extremely powerful air interacting with the sky generated the form of sense perception, and the perception of form transformed into electricity or light to see the world. Now you see what is mentioned here. Anilopi vikurvano nabhas uru balanvitaha. Nabhasa uru. So sky. So anilopi. Anil means air. When it was transformed, so how it got transformed? So nabhasa. So basically, this air was transformed from sky by the glance of the Lord. Sasarja rupa tan matram. And then lochanam. When the Lord again glanced, lochanam means to see. So when again the Lord glanced over the creation, what happened? Jyotirlokasya. The power to see got generated. Right? The power to see is also called a light, which is also a manifestation of
fire. Here it is mentioned as electricity, but actually it is fire. So this fire got generated again when the Lord glanced over the creation. So by first glance, what happened? This material energy got impregnated. Okay, it started moving. Motion started. Then what happens? Again, the Lord glanced. So this from this material energy, sky got generated along with touch sensation. Okay. Now again when the Lord glanced, then what happens? From air and touch sensation, fire and form got generated. Fire means electricity. So this fire and form got generated. That is what is mentioned here in this shloka. Now, when fire or electricity and the form got generated, the power to see matter developed. Now, this is very interesting and very important to understand. Why? You see, now spirit can see only spirit, right? Because if you remember, we always discussed that eyes cannot see. The eyes that we have, it is made up of matter, isn't it? And matter cannot see. Matter has got no capacity to see. Okay. Now that we think that we are seeing through the eyes, but no, it's the soul which is seeing. The power to see belongs to the soul. But how the soul sees, how Atma, because you see, the soul is entrapped within the body. Okay. So then how will the soul see this material world? Because soul is captured within the body, in the heart. So how is the soul seeing this material creation? So that power to see this matter, because we are seeing matter, right? Now, actually, the spirit soul, he sees the spirit, he sees Krishna. But when he gets entrapped within the body, if you remember, we discussed in the previous sessions that how the spirit soul develops false ego, false mind, false intelligence. Then that false ego is the root cause of material body. So everything is false here. So how are you able to see this illusory representation of the Lord? So that power to see this matter, because actually spirit entrapped within the body, how can it see matter? How can he see matter? So he's able to see matter because of the glance of the Lord, right? Because of the glance of the Lord, first air and touch sensation got created, and then the form gets created along with fire and electricity. And because of that, we develop the power to see matter. Because actually, we are meant to see spirit. But how are we able to interact with matter? That is, that power is given by Krishna through his glancing. So through his glance, touch sensation got generated. And then after touch sensation, because of that, air gets generated. And then the form and fire or electricity got generated. Right. Now text 35, shloka number 35. अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत् परवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालमायांशयो गतः अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत् परवीक्षितम् आधत्ताम्भोरसमयं कालमायांशयो गतः. Translation.
When electricity was surcharged in the air and was glanced over by the Supreme, at that time, by a mixture of eternal time and external energy, there occurred the creation of water and taste. Now you see, first air and touch sensation got generated by glance of Krishna. Then again by glance of Krishna, the form and electricity or fire got generated. And now again when the Lord glanced, then water and taste got generated. You see, that's what is mentioned here. Anil, Anil, Anilena Anvitam Jyotir Vikurvat Paravikshitam. So Anil means air got generated, and then Jyoti, fire got generated, and Vikurvat Paravikshitam. And when the Lord again glanced over it, over this, then what happened? Adhat Ambho Rasamayam, Rasamayam, Ras got generated. Ras means taste. And Kalamayam Ambho. Ambho means water. So water and taste got generated. Why? The Lord glanced and time and external energy were mixed. That in the beginning only that mixture happened. Time and external energy. Okay. So the time factor is responsible, but the root cause is glance of Krishna. Because time factor, first, when we are saying first, second, third, that means time, isn't it? In the spiritual creation, there is nothing called as first, second, third. Everything gets created simultaneously. You know, because in spiritual creation, there is no time. There is no creation there. It's not that suddenly things get created and, you know, first this happened, then that, then secondly that happened. That is not spiritual creation. That is material creation. In material creation, there is time. So that is why we are saying that first air got generated with touch sensation. Then after that, that is because of time factor. After that, electricity or fire and form got generated because time and external energy are mixed now. And along with that, glance of the Lord is also taking place. You see, simultaneously, so many things are taking place, isn't it? Air and touch. Before that, it was material energy with time and glance of Krishna. These three are present. So material energy and time factor, they are mixed. And then Krishna glanced. So this material energy started moving. Again, Krishna glanced. So from material energy, time and glance of Krishna, air and touch got generated. Then again, Krishna glanced. So then fire and form got generated. And now here in the shloka, when Krishna is glancing over the material energy, water and taste got generated. Rasamayam Ambho. Ambho means water. Ras means taste. So water and taste got generated. Okay. Now, at the end of today's session, very special secret I will reveal. And it is mentioned here in the Bhagavatam sessions also, in the shlokas also. So, Jyotishambho nusam srishtam vikurvad brahma vikshitam mahim gandha gunam adhat kala mayam yogataha. You see, translation. Thereafter, the water produced from electricity was glanced by the Supreme Personality of Godhead and mixed with eternal time and external energy. Thus, it was transformed into earth, which is qualified primarily by smell. Now you see. So, what is mentioned here? That when this water, electricity or fire and air and sky were created, till now they are created, and now when it was again glanced by Krishna, then what happened? Jyotish Ambho Anus
anusam srishtam vikurvat brahma vikshitam. Brahma vikshitam means Krishna, the Supreme Lord. And when he vikshitam, when he glanced, you see, Brahma vikshitam. Many times when we talk Brahma, people think that it is some vague entity. No, Brahma means Krishna. In the Shloka, Brahma vikshitam. Vikshitam when Brahma sees. Now, how can Brahma see? Because Brahma is a person, Krishna. So when he vikshitam, when he sees this material energy, then what happens? Mahim gandha gunam adhat. Gandha gets generated, smell gets generated. Kala mayam shayogataha. Mahim and gandha. Mahim means earth or matter. This earth or material matter got generated along with smell, right? Along with smell. So, what do we see till now? All these shlokas which we have discussed, you will see one thing common, one aspect common in all the shlokas. And what is that? First, what was generated? This material energy, which is Mahat Tattva. Then Mahat Tattva was glanced by Krishna. Because of that, sound got generated. Sound. And this sound, because of this sound, sky got generated. So sound and sky got generated. Okay. By first glance of Krishna, material energy started moving. Second glance of Krishna, sky and sound got generated. Then third glance of Krishna, what happened? Air and touch sensation got generated. Then the third glance of Lord Krishna, fire or electricity and form got generated. Okay. Then the fifth glance of Lord Krishna, water and taste got generated. And by the sixth glance of Lord Krishna, here we see earth, which is matter, and smell, odor or smell got generated. This whole material phenomenon takes place like this. Now, one aspect which is common amongst all these is glance of Krishna. All this manifestation is taking place because of glance of Krishna. Right? So by glance of Krishna, all these things are happening. So the finishing touch is given by Krishna. This material energy is working with time. But the finishing touch is given by Krishna, just like a painter. If you just mix the colors, can the painting be made just by mixing colors? No. This mixture of colors has to be properly put, right? It has to be properly put. Only then it creates an image. You just take a white sheet and you just pour colors on it. Can any image get created? No. When a painter takes these colors and then he properly mixes them and he draws something, then the image or then the painting gets created and it looks so beautiful, isn't it? Why painting becomes beautiful? Because there is a painter. If you just pour colors over it, can anything get created? No. So these material ingredients are there. Earth, water, fire, air, ether, sound, touch, form, taste and smell. All these elements are there. But it's the Lord who manipulates everything. By his glance, everything gets activated and properly put into its position by Krishna.
And that's how this beautiful creation gets created. Krishna is the painter. He is the painter. Krishna says in the Bhagavad Gita, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते. Right? So, just like without a painter, a painting cannot get created, similarly, without glance of Krishna, nothing will get created. So, all these manifestations, they increase the quality. So, when only sky is there, it has only sound. But when air gets generated, it has sound and touch both. Then when fire gets created or electricity gets created, then it has sound, touch, as well as form. And then when water gets created, it has sound, touch, form, and taste also. And when earth gets created, it has sound, touch, form, taste, as well as smell. So earth has all five qualities. So as manifestation takes place, the qualities keep increasing. So whenever there is next manifestation, it has qualities of earlier manifestations also. So earth means all qualities are there: touch, form, taste, smell, and as well as touch, form, sound, touch, form, taste, and smell. All five qualities are there in earthly manifestation. This is how the creation takes place. But ultimately, everything is happening because of glance of Krishna. That's what we see here. So all of you can like the video, comment, you can share with your friends. You can invite everyone to attend these sessions. Those who are on, all of you can like, subscribe, comment. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा. आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में. प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने देखा अपने पिछले सत्रों में कि किस प्रकार, अब यहाँ पर इस इन श्लोकों में हम देख रहे हैं मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को बता रहे हैं कि किस प्रकार सृष्टि का सृजन होता है। और हमने देखा कि मैत्रेय ऋषि वो बता रहे हैं कि किस प्रकार ये जो महत तत्व है, यानी कि ये जो जड़ प्रकृति है, ये ये व्यक्त रूप में आती है जब भगवान इसको इस पर दृष्टि डालते हैं। उनके दृष्टि से, उनके देखने मात्र से ये सब, ये जो जड़ सृष्टि है ये चलने लगती है, इसमें गति आ जाती है। ठीक है। और समय जो है वो अलग करता है जड़ सृष्टि को और आध्यात्मिक जगत को, यानी वैकुंठ को और ये जड़ जगत को। कौन अलग करता है? समय। वहां समय नहीं है और यहाँ पे समय है। तो जैसे ही जीव इस महत तत्व के संपर्क में आता है, क्योंकि जीव तो भगवान का अंश है, तो जब वो इस भौतिक जगत के संपर्क में आता है तो अहंकार पैदा हो जाता है। अहंकार मतलब गलत पहचान बन जाती है। हमारी वास्तविक पहचान से हम इस आ, हमारी जो गलत पहचान है वो बन जाती है, जिसे हम अहंकार कहते हैं। वास्तविक पहचान क्या है? कि हम भगवान के दास हैं, लेकिन उससे हमारी पहचान बदल जाती है और वहीं से सृष्टि में हम प्रवेश करते हैं इस जड़ जगत में। तो अब किस तरह से ये जड़ जगत को भगवान ने रचा है वो हम अब यहाँ पर देख रहे हैं। तो आज हम प्रारंभ करेंगे अपनी चर्चा को 32वें श्लोक से। तामसो भूत सूक्ष्मद्भिर् तामसो भूत सूक्ष्मादिर् यतः खं लिंगमात्मनः तामसो भूत सूक्ष्मादिर् यतः खं लिंगमात्मनः। ट्रांसलेशन, अनुवाद। The sky is a product of sound, and sound is the transformation of egoistic passion. In other words, the sky is the symbolic representation of the supreme soul. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो कह रहे आकाश जो है वो ध्वनि से बना है और ध्वनि रजोगुण से प्रकट हुई है, और इस तरह से जो आकाश है कई बार लोग उसको भगवान का रूप भी मानते हैं। अब आप देखिए, इस तत्व को हमने, इस ज्ञान को हमने दूसरे स्कंद में भी इसकी चर्चा की थी कि किस प्रकार वहां पर भी इसके बारे में हमने देखा था, जहां पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं पूरी सृष्टि कैसे बनती है उसके बारे में। यहाँ पर उसको थोड़ा सा और विस्तार में मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं। तो वहां पर हमने क्या देखा था? आप सबको ध्यान होगा कि किस प्रकार ये जो जड़ जगत है, ये जो जड़ जगत है, ब्रह्म ज्योति से आकाश बनता है। ये जड़ आकाश जो बना हुआ है ये ब्रह्म ज्योति से बना है। ब्रह्म ज्योति क्या है? आध्यात्मिक जगत, जिसे वैकुंठ कहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति से आकाश बना है। फिर आकाश से आ, हवा, पवन, वायु वो बनती है। फिर वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। तो इस तरह से ये पूरी सृष्टि बनी, हमने दूसरा वहां देखा था। अब यहाँ पर उसी को हम देखेंगे कि किस प्रकार ये सब होता है, और एक बहुत ही विशिष्ट, हम यहाँ पर एक बहुत ही विशेष तरीके से किस तरह से बनता है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि कि तामसो भूत सूक्ष्मादिर। तो हमने देखा था कि किस प्रकार जो हमारा अहंकार है, जिसे हम फॉल्स ईगो कहते हैं, जिसे हम गलत पहचान कहते हैं,
तो जैसे ही हम इस जड़ जगत के संपर्क में आते हैं, क्योंकि हमने भगवान से हम विमुख हो गए थे, तो हमें इस जड़ जगत में आना पड़ता है। और जड़ जगत के संपर्क में आते ही हमारी पहचान गलत बन जाती है, हम सोचने लगते हैं कि मैं ये शरीर हूं। लेकिन वो सब होता कैसे है वो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार सृजन हुआ सृष्टि का वो हम देख रहे हैं। तो जैसा हमने देखा था कि सत्व गुण के समागम से देवी देवता और हमारा जो मन है वो भी बनता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रजोगुण के संपर्क से, रजोगुण के संपर्क से क्या बना था, हमारी इंद्रियां। अब यहाँ पर तमोगुण के संपर्क से क्या बनता है, तामसो भूत सूक्ष्मादिर यतः खम, तो ये आकाश बनता है। और कई बार आकाश को लोग भगवान का विश्व रूप से भी जोड़ देते हैं। तो जो हम भगवान का विश्व रूप समझते हैं, जो हमने विराट रूप, जो विराट रूप हम भगवान का समझते हैं, जिसे यूनिवर्सल फॉर्म भी कहते हैं, ये एक जो कृष्णा ने दिखाया है भगवत गीता में, वो तो पूरा ब्रह्मांड का स्वरूप दिखाया था अर्जुन को, और किस प्रकार कृष्णा इस सृष्टि को चलाते हैं वो दिखाया था। लेकिन जो हम विराट रूप की जब चर्चा करते हैं, तो विराट रूप क्या है, विराट रूप एक एक, एक कल्पना है। वो वास्तविक रूप में कोई विराट रूप नहीं है, वो एक कल्पना है उन लोगों के लिए जो कम बुद्धिमान है, अल्प बुद्धि जिनकी है, जो नहीं समझ सकते कृष्णा को, उनके उनके वास्तविक स्वरूप को, उनके वास्तविक दिव्य स्वरूप को जो नहीं समझ सकते, और जो नहीं मानते उस स्वरूप को, तो वो लोग क्या है, बड़ी बड़ी चीजें उनको दिखानी पड़ती। तो वो लोग पहाड़ को पूछते हैं, नदी को पूछते हैं, तो उनके लिए ये विराट रूप की कल्पना दी गई है। विराट रूप वास्तविक में कुछ नहीं है, ये कल्पना है, ये बताने के लिए कि किस प्रकार ये सृष्टि में सब कुछ भगवान के द्वारा ही चलाया जाता है। ठीक है, तो वह काल्पनिक रूप है जो विराट रूप है, तो वास्तविक विराट रूप कुछ नहीं होता है। लेकिन चूंकि सब कुछ भगवान के कंट्रोल में चल रहा है, उन्हीं के नियंत्रण में सब कुछ है, इसीलिए इसे इस कल्पना को बनाया गया है। ठीक है, लेकिन भगवत गीता में जो विराट रूप बता, जो विश्व रूप भगवान ने दिखाया, वो विराट रूप नहीं है, वो विश्व रूप है। वो किस प्रकार इस सृष्टि को भगवान चला रहे हैं वो अर्जुन ने देखा, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर जो विराट रूप हम भागवत में चर्चा किया था हमने पहले, वो एक काल्पनिक रूप है, वहां पर भी हमने इसको चर्चा की थी। तो जो लोग नहीं समझ सकते, जो अल्प बुद्धि हैं, कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो लोग आकाश को भगवान का रूप मानते हैं, और वो यहाँ पर मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं। 33वां श्लोक। काल मायांश योगेन भगवद वीक्षितां नभः नभसोऽनुसृतं स्पर्शन् विकुर्वन् निर्ममे नीलम्। काल मायांश योगेन भगवद वीक्षितां नभः नभसोऽनुसृतं स्पर्शम् विकुर्वन् निर्ममे नीलम्। ट्रांसलेशन, अनुवाद। Thereafter, the personality of Godhead glanced over the sky, partly mixed with eternal time and external energy, and thus developed the touch sensation from which the air in the sky was produced. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि की, इसके बाद भगवान ने दृष्टि डाली आकाश के ऊपर, और समय और महतत्व इसमें उपस्थित थे, और इसके कारण स्पर्श और वायु का सृजन हुआ। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि किस प्रकार
अलग अलग अवस्थाओं में जब भगवान अपनी दृष्टि डाल रहे हैं तो अलग अलग सृष्टि हो रही है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ था, हमने क्या देखा था कि महत तत्व जो है, यानी महत तत्व का क्या मतलब हुआ, ये पूरा जड़ जो जगत है उस सब का मिश्रण एक साथ एक जगह उपस्थित, उसे महत तत्व कहते हैं। लेकिन जब भगवान ने उसे दृष्टि डाली महत तत्व पे तो जागृत हो गई वो, मतलब उसमें गति आ गई। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि फिर से जब भगवान ने दृष्टि डाली तो आकाश, ध्वनि, ये दो, ध्वनि के कारण आकाश आकाश का सृजन हुआ। और अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं इस श्लोक में कि जब भगवान ने फिर से अपनी दृष्टि डाली, ठीक है, तो क्या हुआ, तो वायु और स्पर्श, ये इनका सृजन हुआ। ठीक है। तो कृष्णा के दृष्टि से जो आकाश और ध्वनि थी, अब उसके बाद, और इसमें एक चीज सब जगह हमें समान मिलेगा, क्योंकि समय का मिश्रण हो चुका है अब। समय ही अलग करता है आध्यात्मिक जगत को और भौतिक जगत को। भौतिक जगत में समय होता है, आध्यात्मिक जगत में समय का काल चक्र नहीं है। काल चक्र यहाँ पे मिश्रित हो जाती है। तो काल और महत्त्व का मिश्रण तो हो चुका है अब, और उसी के कारण तीन गुण आते हैं जो हमने चर्चा किया हुआ है। तो काल और महत्त्व, ये दो का मिश्रण तो है ही। अब इस पे अलग अलग अवस्थाओं में जब भगवान अपनी दृष्टि डाल रहे हैं तो अलग अलग सृष्टि हो रही है, अलग अलग सृजन हो रहा है, और वही हम यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहले जब भगवान ने दृष्टि डाली तो क्या हुआ, क्या हुआ सबसे पहले, महत्त्व में गति आ गई और समय का मिश्रण हो गया। ठीक है। अब जब दूसरी दृष्टि डाली तो ये महत तत्व के और समय के मिश्रण और भगवान की दृष्टि से क्या बना, ध्वनि और आकाश। फिर दृष्टि डाली तो क्या बन गया, अब इस श्लोक में जो हम देख रहे हैं, स्पर्श और वायु। ठीक है। तो अब आप देखते जाइए, अब हम जो हम आगे आने वाले श्लोकों में एक साथ अब हम देखते जाएंगे कैसे कैसे सब सृष्टि हो रही है, और अंत में आपको एक रहस्य हम बताएंगे। ठीक है। तो अब देखिए 34वें श्लोक में क्या बता रहे मैत्रेय ऋषि। अनिलोपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम। अनिलोपि विकुर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम। Translation: thereafter, the extremely powerful air interacting with the sky generated from the form of sense perception, and the perception of form transformed into electricity, the light to see the world. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि उसके बाद, उसके तत्पश्चात हवा और आकाश के बाद जब भगवान की दृष्टि पड़ी तो रूप और अग्नि का सृजन हुआ। अब देखिए, तो हमने पिछले श्लोक में क्या देखा कि काल मायांश योगेन, यानी काल और माया, मतलब ये जो जड़ जगत है इसके मिश्रण, यानी समय और इस जड़ जगत का मिश्रण तो हो चुका है। ठीक है। इनके मिश्रण से और भगवद वीक्षिताम, और भगवान की दृष्टि, भगवद वीक्षिता मतलब भगवान की दृष्टि, काल, समय और
ये जड़ जगत। तब इस पे जब भगवान ने दृष्टि फिर से डाली तो क्या हुआ, नभसो नुसितम स्पर्शम, तो हवा यानी वायु और स्पर्श, उसकी सृष्टि हुई। अब इस श्लोक में हम क्या देख रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं अनिलोपी विकुर्वाणो, तो अब इससे पहले क्या बन चुका है, वायु बन चुकी है स्पर्श के साथ। अब क्या कह रहे हैं, ससर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम, तो रूप, रूप और ज्योति, जिसे हम, आप विद्युत भी कह सकते हैं, अग्नि भी कह सकते हैं, उसकी सृष्टि हुई। ये सब आप देखिए समय काल चक्र में चल रहा है सब। इसीलिए हम जड़ जगत में कहते हैं कि पहले ये बना फिर ये बना फिर ये बना, पहला और हम कहते हैं ना पहले ये बना बाद में ये बना, तो ये पहले और बाद में हम शब्द क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जड़ जगत है और यहाँ पे काल चक्र चलता है। आध्यात्मिक जगत में कुछ भी पहले और बाद में नहीं होता, वहां सृष्टि वो शाश्वत है, वहां पे पहले ये बना बाद में ये बना ये सब नहीं होता है। ये जड़ जगत में चल रही है, ये जो वार्तालाप चल रही है, ये जो संवाद चल रहा है मैत्रेय ऋषि का कि पहले ये हुआ बाद में ये हुआ, ये जड़ जगत के लिए हो रहा है। अब इस श्लोक में आप देखिए बहुत ही अद्भुत तरीके से मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि ज्योतिर्लोकस्य लोचनम, हमारे देखने की शक्ति, हमारे देखने की शक्ति, हमारी दृष्टि की शक्ति। हम कौन है, हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है, सभी को पता है। अब हमको कई बार ऐसा लगता है कि इन आंखों, ये आंखें देख रही हैं, लेकिन आंख नहीं देख सकती। ये जो नेत्र हैं, ये देख नहीं सकती। नेत्र, नेत्र के अंदर कोई शक्ति नहीं है देखने की, क्योंकि नेत्र भी जड़ है ना, ये भी तो जड़ वस्तु है। तो ये जड़ वस्तु में देखने की शक्ति कहाँ से आती है? वास्तविक रूप में देखता कौन है? आंख, ये नेत्र थोड़ी देख सकते हैं, आंखें थोड़ी देख सकती हैं, तो देखता कौन है? तो देखने वाले हम हैं, यानी जीवात्मा। लेकिन अब जीवात्मा तो क्या है, शरीर और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के अंदर फंसी हुई है। स्थूल शरीर है ये अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, यानी पृथ्वी, अ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये स्थूल शरीर है उसका बना हुआ पंचभूत का। और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, और जीवात्मा उसमें है, फंसी हुई है। तो देखने की शक्ति तो जीवात्मा की है, लेकिन जीवात्मा, ये जड़ जो वस्तु है, इसके साथ तो कोई संपर्क ही नहीं है, इससे तो कोई संबंध ही नहीं। तो फिर जीवात्मा कैसे देख पाती है, हम कैसे इस जड़ जड़ वस्तु को देख पा रहे हैं, वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो जब भगवान दृष्टि डालते हैं किस पर, अब आप देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी तक क्या क्या बन गया, अभी तक किस 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 चीज की सृष्टि हो गई। तो देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ, ये महातत्व की रचना हुई। महातत्व मतलब सारे पदार्थ एक साथ, लेकिन इनमें गति नहीं है। तो जो हमने देखा था, भगवान बता रहे अहम बीज प्रदः पिता, तो भगवान की दृष्टि से ये जो जड़ जगत है, ये गर्भवती हो जाती है, इसे गर्भप्रद, यानी इस गर्भवती का मतलब क्या हुआ, जिस प्रकार पिता माता को गर्भवती बनाते हैं, उसी प्रकार भगवान जो है हमारे परम पिता है, वो इस महत तत्व को गर्भवती, यानी इसमें गति आ जाती।
सबसे पहले ये हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो ये गति कैसे आई, तो इसमें समय काल जो है वो प्रवेश, भगवान की एक शक्ति है काल, वो प्रवेश हुई। तो काल के कारण यहाँ पे सब कुछ, इसमें गति आ गई। और वो कब हुआ, जब भगवान ने अपनी दृष्टि डाली। फिर जब भगवान ने दूसरी बार अपनी दृष्टि डाली तब क्या हुआ, तब आकाश और ध्वनि, ठीक है, ध्वनि से आकाश का सृजन हो गया जब दूसरी दृष्टि भगवान ने डाली। फिर जब तीसरी दृष्टि डाली तब क्या हुआ, तब ध्वनि और आकाश का सृजन हो चुका था। और समय और ये जो जड़ जगत है वो तो चली, वो तो है ही, और भगवान की दृष्टि वो भी है। तो फिर जब दृष्टि डाली तीसरी तब क्या हुआ, तब हमने जो पिछले श्लोक में देखा कि स्पर्श और वायु, उसका उसका सृजन हुआ, उसकी सृष्टि हुई। अब यहाँ पर हम इस श्लोक में देख रहे हैं कि फिर से जब भगवान ने दृष्टि डाली तब क्या हुआ, हमारी देखने की शक्ति कैसे बनी, तो अग्नि, जिसे हम विद्युत भी कहते हैं, तो अग्नि और विद्युत और रूप का सृजन हो गया। इससे हमें देखने की शक्ति आती इस जड़ जगत में। जड़ जगत का जो देखने की शक्ति है वो मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप में होती है, तो वहां पर आप, क्योंकि जीवात्मा, आत्मा आत्मा को देख सकती है, तो हम वास्तविक रूप में तो भगवान को देखने के लिए हमारी दृष्टि है। लेकिन यहाँ पे तो हम शरीर के अंदर बंध जाते हैं ना, तो हम जड़ जगत से तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है, तो हम कैसे देख पाते हैं, वो यहाँ पर इस श्लोक में कह रहे हैं कि वो जो दृष्टि है वो प्रदान होती है जब भगवान दृष्टि डालते हैं किस पर, अभी तक जो सृष्टि हो चुकी है, यानी आकाश और वायु वायु और ये महत्तत्व और समय काल, जब इन सब के ऊपर फिर से दृष्टि डाली गई तब हमें, तब ये जो सृष्टि है इसमें देखने की शक्ति, यानी जड़ वस्तु देखने की शक्ति प्रकट हुई। और कैसे हुई, तो अग्नि और रूप की सृष्टि हुई, ठीक है। तो यहीं से देखने की शक्ति, जड़ वस्तु देखने की शक्ति जीव के अंदर जो उसका जो सृजन है वो यहाँ पे होते हुए हम देख रहे हैं इस श्लोक में। अब 35वां श्लोक, अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत् परवीक्षितम् आधत्ताम्भोर समयम् कालमायांश योगतः। अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत् परवीक्षितम् आधत्ताम्भोर समयम् कालमायांश योगतः। Translation: when electricity was surcharged in the air and was glanced over by the Supreme, at that time, by a mixture of eternal time and external energy, there occurred the creation of water and taste. अब इसका अनुवाद देख लेते हैं। तो जब विद्युत, जिसे हम अग्नि भी कहते हैं, जो वायु और आकाश के अंदर थी, उस समय जब फिर से भगवान ने अपनी दृष्टि डाली तो समय और जड़ जगत के मिश्रण और भगवान की दृष्टि से जल और रस की रचना हो गई। अब आप देखिए, फिर से जब दृष्टि डाली भगवान ने, इन सब, अब अभी तक क्या क्या बन गया था, तो ध्वनि, आकाश, जड़ जगत, समय, उसके बाद आ, स्पर्श, वायु, अग्नि, रूप, ये सब तो बन गया। अब जब दृष्टि डाली तो क्या बन गया, जल और स्वाद, यानी जल और रस।
जिसे स्वाद भी कहते हैं, इसकी संरचना, इसकी रचना हो गई। ठीक है। अब हम आते 36वें श्लोक पर। 36वां श्लोक। तो 35वें श्लोक में वही कह रहे हैं कि अनिलेन अन्वितम ज्योतिर विकोदत। तो अनिलेन अन्वितम ज्योतिर, तो ये सब बच चुके हैं। अनिल यानी हवा, ज्योति, परवीक्षितम, वीक्षितम, लेकिन अभी दृष्टि फिर से पड़ी भगवान की। तब क्या हुआ? आधत्त अंभो रसमयम, अंभो और रस, अंभो मतलब जल और रस, ये इसकी सृष्टि हो गई। और काल मायांश योगता, और समय और माया तो मिली ही हुई है, वो तो सबसे पहले वही हुआ। उसके बाद जब भगवान की दृष्टि पड़ी, तब यहाँ पर जल और स्वाद, जल और रस की सृष्टि हो गई। अब 36वां श्लोक। ज्योतिषांभोनु संसृष्टम विकुर्वद ब्रह्म वीक्षितम महीम गंध गुणाम आधात काल मायांश योगतः। ज्योतिषांभोनु संसृष्टम विकुर्वद ब्रह्म वीक्षितम महीम गंध गुणामाधात काल मायांश योगतः। ट्रांसलेशन, अनुवाद। Thereafter, the water produced from electricity was glanced over by the Supreme Personality of Godhead and mixed with eternal time and external energy. Thus, it was transformed into the earth, which is qualified primarily by smell. अब आप देखिए, इसका हम अनुवाद देख लेते हैं। तो उसके बाद जल, अग्नि, ये जड़ जगत, समय के साथ ये सब कुछ बन चुका था, और फिर से भगवान की दृष्टि जब इस पर पड़ी, तो पृथ्वी और गंध की सृष्टि हो गई। तो अब ये अंतिम सृष्टि, जिसके कारण सब कुछ है, उसकी सृष्टि हुई। किसकी? पृथ्वी और गंध की। अब आप देख रहे हैं। तो यहां पर हम आप समान एक समान चीज ये देखेंगे कि इन सब की सृष्टि जो हुई है, इन सब सृष्टियों में एक चीज समान है कि भगवान की दृष्टि। ठीक है। आप साथ, जैसे उदाहरण आपको देता हूं कि जैसे आप सारे रंगों को मिला दें, तो क्या आ, एक सुंदर सी छवि बन सकती है? केवल आप रंगों को ले लें और एक जगह पे डाल दें, तो क्या सुंदर छवि बन जाएगी? नहीं। वो तो जब तक एक जो पेंटर है, जो छवि बनाता है, जो छवि बनाने वाला है, जब तक वो रंगों को लेके बहुत ही सुंदरता से उसको बनाएगा नहीं, तब तक कुछ नहीं बनेगा, तब तक वो सुंदर दृश्य नहीं बन सकता। खाली रंग लेके सारे एक जगह पे डाल दो, उससे कुछ नहीं होगा। तो जो ये जो इस सृष्टि को रचने वाले जो पेंटर हैं, यानी इस जो छवि बनाने वाले हैं, वो भगवान है। ये सारे जो पदार्थ हैं वो तो एक जगह पे आ गए, लेकिन ये जैसे जैसे भगवान की दृष्टि पड़ती गई, ये सब में ये सब बनने लग गया। और ये सुंदर सृष्टि जो बनी है, ये भगवान की दृष्टि से बनी। ठीक है। तो जैसे जैसे सृष्टि होती जाती है, उसमें पिछले गुण भी मिलते जाते हैं। जैसे अब आप देखिए अंत में, अब इस सब को हम एक साथ समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? तो एक ही आध्यात्मिक जगत ही था, वैकुंठ। उसके बाद कृष्णा की इच्छा हुई, उनकी इच्छा शक्ति से महत्तत्व बन गया, यानी सारे पदार्थ एक जगह एकत्रित हो गए। अब उसके बाद जब भगवान ने दृष्टि डाली, तो गर्भवती, यानी ये जो महत्तत्व है, इसमें गति आ गई। ठीक है। फिर भगवान ने जब दृष्टि डाली, तो ध्वनि
और आकाश बन गया। फिर उसके बाद, और उससे पहले क्या हुआ था, ये गति कैसे आई, तो समय काल, जो भगवान की शक्ति काल है वो इसमें सम्मिलित हो गई। तो काल और माया यानी महत्त्व ये तो है ही सब जगह। इस पे जब भगवान की दृष्टि पड़ी तो ध्वनि और आकाश बना। फिर उसके बाद स्पर्श और हवा, वायु बनी। फिर उसके बाद अग्नि यानी विद्युत और रूप बना। फिर उसके बाद जल और रस बना यानी स्वाद बना। और अंत में पृथ्वी और अ, गंध ये बन गया। तो आकाश में सिर्फ ध्वनि थी, सिर्फ जब आकाश बना था तो ध्वनि थी। लेकिन जब उससे वायु बना तो उसमें ध्वनि और स्पर्श दोनों आ गए। फिर जब उससे अग्नि या विद्युत बनी तो उसमें स्पर्श, आ, उसमें ध्वनि, स्पर्श और रूप तीनों आ गए। फिर उसके बाद जब जल बना, ठीक है, तो उसमें ध्वनि, स्पर्श, रूप और रस यानी स्वाद ये सब आ गए, ये चारों आ गए। और अंत में जब पृथ्वी का सृजन हुआ, जड़ जिसे कहते हैं, उसमें ये पांचों आ गए। कौन कौन से? ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद यानी रस और गंध। तो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श ये पांचों पृथ्वी में उपस्थित है। इस तरह से ये पूरी सृष्टि का सृजन हुआ। लेकिन सृष्टिकार कौन है, इसको बनाने वाले कौन है? सारे रंगों को मिला देने से कुछ नहीं बनेगा। जब तक उसे पेंटर पेंट नहीं करेगा कुछ बनेगा नहीं। तो पेंटिंग, जो हम सुंदर चित्र देखते हैं, चित्रकार से बनता है। तो चित्रकार जब तक वो सारे रंगों को एक जगह पे सुंदरता से बनाएगा नहीं, तब तक कुछ नहीं बनेगा। तो ये सुंदर सृष्टि जो बनी है, ये मिश्रण तो हो रहा है, लेकिन इस मिश्रण को भगवान जब दृष्टि डाल रहे हैं तब इसमें सुंदरता आ रही है, तब ये पूरी सृष्टि बन रही है। तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, और आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसको समझ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।